Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, how are you? I hope you are all well. Guys, today my topic about bronchitis. आज हम bronchitis के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ bronchitis क्या है. Okay? Bronchitis. Let's start about bronchitis. Bronchitis. It is acute and chronic inflammation. It is acute and chronic inflammation of bronchi. Is called bronchitis. It most common in childhood. Guys, हमारे साथ bronchitis क्या है? ये दो वर्ड से बने. Bron mean bronchi, intus mean inflammation. So इस दिनों का मतलब it is the acute and chronic inflammation of bronchi. Is called bronchitis. ये हमारे साथ क्या है? जब हमारे साथ acute और chronic शदीद inflammation हो जाता है, सूजन होता है, स्वेल हो जाता है, bronchi, bronchial trees जो लंग्स में मौजूद होता है, इसकी inflammation होता है, इसको bronchitis कहते हैं. और bronchitis हमारे साथ क्या है? Most common in childhood. ये ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं. ज्यादातर हमारे साथ इम्पैक्ट जो करते हैं वो चाइल्ड करते हैं. चाइल्डहुड में ये ज्यादा आम होता है. ये हो गया हमारे साथ bronchitis, inflammation of the bronchial trees. अब हम आते हैं इसकी causes of bronchitis कि हमारे साथ कौन सी cause है जो bronchitis cause करता है. How many types of causes of bronchitis यानी bronchitis. Number first, diphtheria cause bronchitis. Number second, virus. और तीसरा हमारे साथ complication of measles. ये हमने पढ़ा है कि हमारे साथ bronchitis क्या है और ये हमारे साथ inflammation में आता है किसकी bronchi की. फिर ये क्या most common in childhood में होता है. अब हम आते हैं bronchitis हमारे साथ है कि कौन वजह से निकाल होता है. बैक्टीरिया से निकाल होता है, दूसरा वायरस से निकाल होता है bronchitis, और तीसरा complication of measles. जो measles की जो complication है measles की वजह से भी हमारे साथ bronchitis भी होता है. ये हो गया हमारे साथ का. अब हम आते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस. ये अलामत इसकी क्या है? अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस. साइन एंड symptoms of bronchitis. Signs and symptoms of bronchitis. फर्स्ट में हमारे साथ क्या होता है? सीवियर कफ, यानी कांसी ज्यादा होते हैं अलामत में. दूसरा हमारे साथ इसमें क्या होता है? स्पूटम यानी बलगम आते हैं. तीसरा हमारे साथ क्या होता है? चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है. चौथा हमारे साथ फीवर होता है. पांचवा हमारे साथ क्या होता है? इसमें नेजल हमारे साथ डिफिकल्टी होते हैं, डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग. सांस में हमारे साथ दुश्वारी होता है. ये हो गया साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस. सीवियर कफ होता है, शदीद खांसी होता है, स्पूटम बलगम आते हैं, चेस्ट पेन, सीने में
दर्द होता है, प्योर बुखार होता है हमारे साथ गाइस, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस में हमारे साथ दुश्वारी होता है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकाइटिस, डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकाइटिस में हम हिस्ट्री टेकन, हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री हम लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन? चेस्ट एक्सरे, CXR शॉर्ट फॉर्म में चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इसलिए कहते हैं कि आइडेंटिफाइड होते हैं हमारे साथ, जो भी लोग अफेक्टेड होता है इसको आप आइडेंटिफाई करें। ये हो गया हमारे साथ डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकाइटिस। हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन का हेड टू टो असेसमेंट करते हैं। तीसरा CXR एब्रिविएशन है चेस्ट एक्सरे करते हैं। गाइस अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। I arrive at then after I start treatment. Treatment of bronchitis. Treatment of ब्रोंकाइटिस कि हमारे साथ ब्रोंकाइटिस की इलाज क्या है? नंबर फर्स्ट स्टीम इनहेलेशन, यानी हम इसको बांप देते हैं। जो हमारे साथ स्पूटम है वो क्या होता है? आउट आ जाता है, एक्सपेल करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं इसके स्टीम इनहेलेशन देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी यानी ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ड्रग्स देते हैं। चौथा हम क्या करते हैं इसको एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक देता है, यानी पेन रिलीवर, एनाल्जेसिक पेन रिलीवर जो हमारे साथ होता है। और लास्ट में हम क्या देते हैं? 5 रुपये हम कहते हैं फ्लूइड, यानी फ्लूइड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारे साथ इसको देते हैं। तो गाइस ये हमारे साथ हो गया कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस में हम स्टीम इनहेलेशन की बात देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन देते हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग देते हैं, एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीवर के देते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, और एंटीपायरेटिक देते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ ब्रोंकाइटिस। हमने खूब तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि ब्रोंकाइटिस क्या है। सो